keyboard, and there is the grand total auto-summed. Time saver number 2. Double-click the fill handle. Let's say I need a new column, column H, and here in column H, I need to put in the data. Off for each employee. So I'll click on H1, type in day off, and let's say we start with Monday. John Doe has Tuesday off. Jane Smith has Wednesday. And this is just going to continue in this pattern. To continue the pattern, of course I could select Wednesday in this case, and then click and hold the click on the little green square in the lower right corner of cell H4. That's the fill handle. With the click held, I can drag down the range of days. Data, making sure I get to the proper place, and then release the mouse button, and all of that information is filled in. So that's nice, but there's a better, faster way. All you really have to do is click on H4 and then double-click on the fill handle, and the autofill is performed for you all the way down the range of data. Okay, what else do I need to improve about this spreadsheet? Well, I would like to change the formatting for column D. I want these numbers to show up as currency. I could do this though. Hard way. I could click on column D, for example, and then go up on the Home tab. In the number group, I could choose the formatting that I want for this range. Or I could just hold the Control key, hold the Shift key, and tap the $sign button. And the entire column of numbers now gets a $sign and commas to indicate that this is currency. How about percentages? If I hold Control, hold Shift, and tap the % sign, the number formatting is changed to %. Similarly, use Control, Shift, and £sign for date. And Control-Shift exclamation point turns them into general numbers, but you do see the commas applied there. So with number formats, definitely try Control-Shift and then either $sign, percentage, £sign, sign, at, or exclamation point. Time saver number 4. Use Control-1 to quickly format cells. In some ways, this is similar to what I just showed. So let's say, for example, I want to draw attention to the commissions earned. I could click on column G and press Control-1 and I get a Format Cells pop-up. I could certainly switch the number format, let's say, to currency, but I could also change the font, making it bigger, making it bold, even changing the color. You can also change the fill color, maybe making it gray, and then click OK, and those changes are all made. So Control-1 is just a bit faster than right-clicking to choose Format Cells, and it's also faster than going up here to the Home tab and using the font group. Time saver number 5 is use Control and Page Up or Page Down to quickly switch between sheets in a workbook. As you can see, I have two sheets, Sheet 1 and Sheet 2. In this workbook, the one I've been working in, and then there's another sheet I just added, which is empty right now. Now, how can I quickly go back and forth? Just hold the Control key and tap Page Up, and it will take you back to a previous tab. Control key and Page Down takes you to the next worksheet or spreadsheet in a workbook. So those are 5 Excel time savers. Today, we're going to create a chart in just 1 second using a shortcut. Here's a dataset showing sales by product. In order to turn this into a chart instantly, just select the data and press Alt F1 on your keyboard. Boom! A beautiful column chart appears right inside your sheet. No need to click through menus or insert options. In case if you want the chart to be in a separate sheet, select the data and just press F11, and Excel will place your chart on its own tab. That's a wrap for this Excel live session. If you learned even one new trick, give this video a like, subscribe, and check the replay for anything you missed. I'll see you in the next one. Friends, you must have heard a lot about Power Query in Excel. Today in this video I will tell you in full detail what is Power Query, what are its benefits and how to use it,
So watch it very carefully, and if you have any questions then ask in the comment, and if you are new to this channel then you are welcome. Make sure to subscribe the channel. Let's start. As you know, in our day-to-day life, in Excel we have to do a lot of repetitive work like removing blank rows, removing duplicates, splitting columns, etc. All these tasks take a lot of time. We use Power Query to complete this time-taking task quickly and to automate it. See, I have this raw data which I have taken from an external source. In this you will see that some blank rows are visible. You also have some duplicate data in it, and there are many columns which are not useful. Those which are unused and the names which are visible are full names. There is no first name or last name. To use Power Query in this, first of all you have to select the entire data. Like here, this is the data. To select this entire data, click anywhere and press Ctrl+A. You will see that only a small area is selected. The entire data is not selected because whenever Excel finds a blank row, it understands that it is some other section and does not include it in the selection. So for that you can press Ctrl+A once more, but when you press Ctrl+A for the second time, you will see that the entire sheet has been selected, but you have very limited data, so this is also not a right approach. Because whatever you do, it will affect the entire sheet and not just your data, so for that we use the third option. That is a very correct option. For that, first of all press Ctrl and N key. By pressing Ctrl and N key, your pointer reaches to the last column of the last row where data exists, and here you will press Shift Ctrl Home. Press Ctrl and Shift together and press Home along with it. So now you will see that your entire data has been selected. Blank rows are also included in this entire selected data, and this is what we want because now we will do the entire data cleanup through Power Query. So to use Power Query, first you will click on the Data tab, and after that you will see that there is a Get and Transformation ribbon section here. In Get Data, you can choose different data sources. For your data, if your data is in a file then you can select from File. If your data is in a database then you will have to select the From Database option. Similarly, if your data is in a cloud server, you can select from Azure. Because we already have the data available, we will not use any of these options. Instead, we will use from Table Range. With this option, the data that you have in your Excel sheet will be used. As soon as we click, it selects the entire data, and after selecting it creates a new table. After this, whatever operation we apply in Power Query, its effect will be on this entire table. You will see here, Excel has directly selected the entire range, and there is an option below here. I have table headers, so if you select it, it means that whatever header row you have here, it will treat it as a header row. Meaning, it will consider this data as a header, but if you keep it unchecked, then it will also consider the header row as data. So right now we keep it unchecked and click OK. On clicking OK, the Power Query editor will open. Now all the settings have to be configured in this Power Query editor. Once all the settings are done, after that you just have to refresh whenever you get new row data. Now whatever you are doing in this Power Query editor, it will be applied to your main Excel sheet. Column headings are assigned to the entire Excel data. Look here, this is column 1, column 2, column 3, column 4, column 5, and here is your column header which you have brought, but you had unchecked the I have table header in the table creation box there. So Power Query assigned its columns to this raw data. Let us now use the options of Power Query. To decorate our data, the first thing we will do is to set our headers, because column names with numbers do not look professional. For this, we will select the option Use First Row as Header in the menu. If you click on the drop-down of this option, there are two options in it. The first option is Use First Row as Headers, which means that the first row of our data will be used as header, and the second option is Use Headers as First Row, which means if we want to use the column names given by Power Query, then we will choose the first option here. As soon as we click on the first option, you will see that the headers created by Power Query have now been removed and our column name as headers have been set. And as soon as we have done this setting, there is a box of query settings on the right side. Our action has been added in it. All the changes or settings updates that you will make will be stored in this window, if you have made any change and you have to revert it. So you can clear the action by clicking on the cross. After setting the header row, now first of all we remove the blank rows. As you can see, there are a lot of blank rows here.
To remove them, you can click on Remove Rows. Or you can open the drop-down. On opening the drop-down, you will get many options like Remove Top Rows, Remove Bottom Rows, because we have to remove blank rows. So we will select Remove Blank Rows option and see all the blank rows have been removed. And an action has also been added in the query setting. Now let me show you how to undo this action. For this, you just have to cross the last action in the query setting and your last action will be reverted and the blank rows will come back. For any reason, if you don't like any action, you can clear it by clicking cross button. Let's apply this action again and remove the blank rows, because we don't need blank rows in our data. Now the blank rows have been removed. Now after this, if you look carefully. So in this data of ours, there are a lot of duplicate records which we don't need. If you want to see, then we can sort this data. For this, click on the column and sort the data by clicking on the ascending or descending sort button. Now you can see that we have a lot of duplicate data. Just like we have removed the blank rows, in the same way to remove duplicate records, we will click on Remove Rows and select Remove, Duplicate, and on clicking, the duplicate records have been removed and this action has also been recorded in the query settings. As you perform any action, Excel keeps adding it to the query settings and it uses this memory when you add new data and refresh. We will see this later in this video. Now for the next step, we will remove some columns. Because this is our raw data and there are many columns in it which are not useful for us. For example, to remove department code column, we will select it and click on Remove Columns in the Remove Manage Columns section. And if we click on the drop-down of Remove Columns, then two options will appear in it. First, Remove Columns, which means the selected column will be removed, and second, Remove Other Columns, which means all the columns except the selected column will be removed. We will click on Remove Column here because we have to remove the selected column. But there are many columns in our sheet. We have to remove them, so for that we will press the Control button. We will select all the columns with a mouse click and then click on Remove Columns, which will remove all the selected columns, and this action will be stored in the query settings. Friends, I hope you find this video informative. Please let me know by commenting. Which topic did you like, or do you have any question? You can ask that too in the comment, and if you are new to this channel then please do subscribe. Let's continue. There are still many options. Which topic did you like, or do you have any question? You can ask that too in the comment, and if you are new to this channel then please do subscribe. Let's continue. There are still many options left to be completed. Please do watch till the end. Now we will check the split column option. As you can see here, the full name of the employee is given, but we have to separate the first name and last name. For this we will use split column. For this you will see the split column drop-down option in the transform section. When you click on it, you will get multiple options in it, which tells on which basis your text has to be split, like the by delimiter option will split the text. On the basis of special character, the second option will split on the basis of number of characters. You should explore it and tell in the comment if you have any question in the same way. You will also get the split column option on the column. If you right-click on any column, you will get the option of split column in it too. So you can select this option from anywhere. Here we will click on by delimiter option in split column, which will open this window. It has select and enter delimiter drop-down. On clicking on it, it gives you multiple options as to how you want to split your text. Like either you can split on the basis of space, or on the basis of comma, or on the basis of equals. Here we will select space because in our full name there is space between first and last name. After that there is next split at option, in which we have to select from which position we want to split it. By default each occurrence is selected, which means as many times as it finds the space, it will split the name. We will keep the default options selected and click OK. See, the full name is now split. Here the name, which had 3 words, has been split and spread in 3 columns because we had selected split on each occurrence. Let us remove this section from the query settings because we have to split only on the basis of first space. Now we will again select split column and select by daily meter option. And this time, instead of the last option, this time we will select leftmost daily meters, so that first of all the name will be split by the leftmost space, and after that if there is any other space then it will not be used. See here the full name has been split and there is one more space in the last name, but it is not split because we had selected the leftmost option.
Next we will use the formatting option in Power Query. Here is the salary column in which salary is given, but if you see it, it is not formatted properly. At some places there are 2 zeros after the decimal, at some places there is 1, and at some places there is no decimal at all. So it is important to format the salary data. It is very easy to format the salary in currency format. For this, right-click on the salary column, and on right-clicking you will get many format options like decimal number, currency, whole number, percentage, etc. Here we will select the currency, and you can see that now the entire data of the salary column has been properly formatted, and at the same time this formatting action has also been recorded in the query settings. Next, now we will learn to apply the calculated column. As you can see, that we have all this data related to employees, and in this we also have the salary of the employees. Now if we have to increase the salary of the employees by 10%, then how can we do that? We do not have any column here in which we can show the salary increase. So for that we have to add a new column. To add a new column, click on the Add Column tab, and in the General section you will find the option of Custom Column. Click on it. Now in the Custom Column box, you have to fill the information related to the new column. First of all, give the name of the new column. We keep the name Increase Salary here. Then in the Custom Column formula, we have to write the formula, which will increase the salary by 10%, so for this, after equals on the right side. Select the salary from the available columns and click on the Insert button and write 1.1 by applying the multiply sign, which will increase the salary by 10%. After that, click on OK. As soon as you click on OK, a new column will be added at the end of the sheet, in which there will be our increased salary, which has been calculated on the basis of the given formula. Now we will right-click on it and change its format, because salary should be in currency format. So we will change its format type to currency and drag this column to the salary column. See this? Both our columns, salary and increased salary, have come together. We have almost completed our formatting. Now on looking at it, this data looks fine, which means that now we can close the Power Query. And we can come back to our original Excel file. All the actions that we have performed, all those actions have also been recorded in the query settings. To go back, we will click on the Home tab and we will get the option. On clicking the Close and Load drop-down, you will get 2 options. First is Close and Load, and the second is Close and Load to. The first option will close this Power Query window, and the entire formatted data will be copied to a new sheet in your Excel. And the second option will give you the option of selection, in which you can select where you want to load this formatted data. For now, we will cancel it because we have to load our data in the same Excel file. Now we will use the option of Close and Load. As soon as you click, the entire data and all the settings of Power Query are copied and made available in a new sheet. See, our formatted data has been loaded in a new sheet, and because this is a table, the table has been automatically formatted on it, which you can change with the table style. Now we have the entire formatted data available, which is in this new sheet, and our original data, which is a raw data, is available in our first sheet, Sheet 1. See, in Sheet 1 we have 57 rows, but after removing the duplicates, there are only 46 rows in the formatted sheet. Now, as I told you in the beginning of the video, that we will perform all the actions using Power Query, and after that we just have to refresh. So let's see how to do that. For this we have to add extra data to our original sheet. I have another Excel file which has extra data. See, there are some extra records available in this Excel file. Now I will copy them. We can select this entire data by pressing Ctrl-A, or because there is no blank rows in it. By pressing Ctrl-A, the entire data will be selected, because we already have existing data and we have to add this data to it. So we will copy all the data except the column headers in this data and paste it in our original sheet. See this? This extra data is exactly similar, raw data, which matches our original raw data exactly. So earlier we had 57 rows, and after the additional data we now have 19 rows, and in our format sheet we have 46 rows now. And now to convert the newly added row data in this list to formatted style, click on the Data tab, and in the Data tab you will see the Refresh All button, on clicking which all the query settings stored in Power Query will be applied and the new row data will also be properly formatted. See this? Our entire data has been formatted, in which there are no blank rows,
No duplicates, full name is split and all the actions that we performed in Power Query have been applied here. So friends, I hope you liked this video and you must have learned a lot from it. If you find the video useful, please like it, and if you are new to this channel, please subscribe and share it with your friends. Thank you for watching. See you in the next video where we will learn some more new things. Bye for now. क्या आपको भी ये पता लगाने में दिक्कत हो रही है कि आपका पॉइंटर कहाँ है और सिलेक्शन चेंज के समय करंट रो को इस तरह हाईलाइट करना चाहते हैं? चलिए शुरू करते हैं और इसे सेटअप करते हैं। हम इस डेटा पे काम करेंगे। इस शीट में अभी करंटली सिलेक्टेड रो की फंक्शनैलिटी एक्टिव नहीं है। हम इस फंक्शनैलिटी को स्टेप बाय स्टेप करके एक्टिव करेंगे। सबसे पहले आपको पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करनी होगी। ये बेहद आसान है। आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल दबाएं और बस आपकी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद होम टैब पर जाए और स्टाइल्स सेक्शन खोजें। वहां आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें, फिर न्यू रूल चुनें। जब पॉपअप दिखाई दे तो लिस्ट में आखिरी ऑप्शन पे क्लिक करें। अब यहां पे आपको फॉर्मूला लिखना है जो एक्सेल को इंस्ट्रक्शन देगा कि रो को कैसे हाईलाइट करना है। इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको ये फॉर्मूला टाइप करना है। ये आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा है और मैंने ये फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन पे भी डाला हुआ है, तो आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मूला है इक्वल्स रो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स सेल ओपन ब्रैकेट बिटवीन कोटेशन रो देन क्लोज ब्रैकेट। मैं रिपीट करता हूं, इक्वल्स रो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स सेल ओपन ब्रैकेट बिटवीन कोटेशन रो देन क्लोज ब्रैकेट। ये फॉर्मूला करंट रो नंबर को एक्टिव सेल की रो से मैच करता है और उसके बेस पे रो को हाईलाइट करता है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से आप अपनी एक्टिव रो को हाईलाइट करना चाहते हैं। आप कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। मैं यहां एक्टिव रो के लिए येलो कलर सिलेक्ट कर लेता हूं और ओके क्लिक करता हूं। ओके करते ही आप देखेंगे कि आपकी रो का कलर येलो हो गया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बात यह है कि दूसरी रोज पर क्लिक करने से रो हाईलाइट नहीं हो रही है। और आप ये तो नहीं चाहेंगे कि सिर्फ एक रो ही हाईलाइट रहे, बल्कि आप चाहते हैं कि जैसे जैसे आप अलग अलग रो पर क्लिक करेंगे, एक्सेल उस रो को हाईलाइट करे। इसे सेटअप करने के लिए नीचे अपनी वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक करें और व्यू कोड पे क्लिक करें। जब कोड एडिटर खुले तो अगर यह आपको थोड़ा डरावना लगे तो चिंता ना करें, यह आपके विचार से कहीं ज्यादा आसान है। अगर एडिटर में सही वर्कशीट पहले से नहीं खुली है तो वर्कशीट चुनने के लिए सबसे ऊपर दिए गए ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करें। अब प्राइवेट सब और एंड सब वाली लाइंस के बीच एक सिंपल लाइन लिखें, टारगेट डॉट कैलकुलेट। मैं इसे दोहराता हूं, टारगेट डॉट कैलकुलेट। बस एडिटर बंद करें और अपनी वर्कशीट पर वापस आ जाएं। अब जैसे ही आप किसी भी रो पर क्लिक करेंगे, एक्सेल उसे आपके लिए अपने आप हाईलाइट कर देगा। आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह ही आपको भी ये ट्रिक उपयोगी लगी होगी। अगर आपने ऐसा किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं। और अगर चैनल पर नए हैं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अन्य एक्सेल टिप्स और ट्रिक्स से न चूकें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। दोस्तों, आपने एक्सेल में पावर क्वेरी के बारे में बहुत सुना होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि पावर क्वेरी क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स है और इसको कैसे यूज करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका वेलकम, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सेल में हमें बहुत सारे रेपिटेटिव काम करने पड़ते हैं, जैसे ब्लैंक रोज रिमूव करना, डुप्लीकेट रिमूव करना, कॉलम स्प्लिट करना, वगैरह वगैरह। इन सब कामों में टाइम बहुत लगता है। इस टाइम टेकिंग टास्क को जल्दी करने और ऑटोमेट करने के लिए हम यूज करते हैं पावर क्वेरी। मेरे पास देखिए कि ये रॉ डेटा है जो कि मैंने एक्सटर्नल सोर्स से लिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि कुछ ब्लैंक रोज दिख रही है। आपको इसमें कुछ डुप्लीकेट डेटा भी है और बहुत सारे कॉलम ऐसे हैं जो काम के नहीं हैं, जो अनयूज्ड हैं और जो नाम भी दिख रहे हैं फुल नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है इसमें। पावर क्वेरी का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना होता है। जैसे यहां पे ये डेटा है,
इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कहीं पे भी क्लिक करें और कंट्रोल प्रेस करें। आप देखेंगे कि आपका सिर्फ थोड़ा सा एरिया सिलेक्टेड है, पूरा डेटा सिलेक्टेड नहीं है। क्योंकि जब भी एक्सेल को कोई ब्लैंक रो मिलता है तो उसको समझ में आता है कि ये कोई दूसरा सेक्शन है और उसको सिलेक्शन में इंक्लूड नहीं करता है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक बार और कंट्रोल दबाएं। लेकिन जब आप दूसरी बार कंट्रोल दबाते हैं तो आप देखेंगे कि पूरी शीट सेलेक्ट हो गई है। तो आपके पास डेटा बहुत कम है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉलम और रोज सारे सेलेक्ट हो गए। तो ये भी एक राइट अप्रोच नहीं है, क्योंकि जो भी आप काम करेंगे तो पूरे शीट पे इफेक्ट पड़ेगा, ना कि सिर्फ आपके डेटा पे। तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन यूज करते हैं। वो एक बहुत ही सही ऑप्शन है। उसके लिए आप सबसे पहले कंट्रोल और एंड की प्रेस करें। कंट्रोल एंड दबाने से आपका सेल जो है बिल्कुल लास्ट रो के लास्ट कॉलम में पहुंच जाता है। और यहां पर आप शिफ्ट कंट्रोल होम प्रेस करेंगे। कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ दबाएंगे और उसके साथ होम प्रेस करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया है। इस पूरे सिलेक्टेड डेटा में ब्लैंक रोज भी इंक्लूडेड है, और यही हम चाहते हैं, क्योंकि पावर क्वेरी के थ्रू हम अब पूरा डेटा क्लीन अप करेंगे। तो पावर क्वेरी यूज करने के लिए सबसे पहले आप डेटा टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर गेट एंड ट्रांसफॉर्मेशन रिबन सेक्शन है। इसमें गेट डेटा में आप डिफरेंट डेटा सोर्स चूज कर सकते हैं आपके डेटा के लिए। जैसे आपका डेटा किसी फाइल में है तो आप फ्रॉम फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका डेटा किसी डाटाबेस में है तो आपको फ्रॉम डाटाबेस ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसी तरह यदि आपका डेटा किसी क्लाउड सर्वर में है, आप फ्रॉम एज्योर सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है एक्सेल शीट में, तो हम ये ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे फ्रॉम टेबल रेंज। इस ऑप्शन से आपके पास जो डेटा है ये डेटा यूज हो जाएगा। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेता है और सेलेक्ट करने के बाद एक नया टेबल बनाता है। इसके बाद हम पावर क्वेरी में जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे उसका इफेक्ट इस पूरे टेबल पे पड़ेगा। यहां पे आप देखेंगे एक्सेल ने डायरेक्टली पूरी रेंज सेलेक्ट कर लिया है और यहां पे एक नीचे एक ऑप्शन है माय टेबल हैज हेडर्स। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपके पास यहां पर जो आपका हेडर रोज है ये इसको ऐसे हेडर रो ट्रीट करेगा। मतलब इस डेटा को ऐसे हेडर मानेगा, लेकिन अगर आप इसको अनचेक रखते हैं तो ये हेडर रो को भी डेटा मानेगा। तो अभी हम इसको अनचेक रखते हैं और क्लिक ओके करते हैं। ओके क्लिक करते ही पावर क्वेरी का एडिटर ओपन हो जाएगा। पावर क्वेरी के इसी एडिटर में अब सारी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करना है। एक बार सारी सेटिंग्स हो जाएगी, उसके बाद आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है कभी भी यदि आपके पास नया रॉ डेटा आएगा। अब इस पावर क्वेरी एडिटर में जो भी चीज आप कर रहे हैं वो सब आपकी मेन एक्सेल शीट में अप्लाई हो जाएगी। एक्सेल के पूरे डेटा को कॉलम हेडिंग असाइन है। ये देखिए, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, कॉलम 5 है, और यहां पर आपका कॉलम हेडर है जो कि आपने लेके आया है, लेकिन आपने वहां पर टेबल क्रिएशन के बॉक्स में माय टेबल हैज हेडर को अनचेक रखा था, इसलिए पावर क्वेरी ने अपने कॉलम्स असाइन कर दिए इस रॉ डेटा को। चलिए अब हम पावर क्वेरी की ऑप्शंस यूज करते हैं अपने डेटा को डेकोरेट करने के लिए। सबसे पहला काम हम अपनी हेडर रो सेट करेंगे, क्योंकि कॉलम नेम्स विद नंबर प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। इसके लिए हम मेन्यू में ऑप्शन यूज फर्स्ट रो एज हेडर सिलेक्ट करेंगे। यदि आप इस ऑप्शन के ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, जिसका मतलब हमारे डेटा की फर्स्ट रो एज हेडर यूज होगी, और दूसरा ऑप्शन यूज हेडर्स एज फर्स्ट रो, जिसका मतलब जो कॉलम नेम्स पावर क्वेरी ने दिया है वो यूज करेंगे। तो हम यहां पहला ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे ही हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि पावर क्वेरी ने जो हेडर्स बनाया था वो अब रिमूव हो गया है और हमारा कॉलम नेम एज हेडर्स सेट हो गया है। और जैसे ही हमने ये सेटिंग की है, राइट साइड में क्वेरी सेटिंग्स का बॉक्स है, उसमें हमारा किया हुआ एक्शन ऐड हो गया है। जितने भी चेंजेस या सेटिंग अपडेट आप करेंगे वो सारे इस विंडो में स्टोर होते जाएंगे। यदि आपने कोई चेंज किया और आपको वो रिवर्ट करना हो
तो एक्शन को क्रॉस पे क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं। हेडर रोज सेट करने के बाद अब हम सबसे पहले ब्लैंक रोज रिमूव कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पे काफी सारी ब्लैंक रोज है। इनको रिमूव करने के लिए आप रिमूव रोज पे क्लिक कर सकते हैं या ड्रॉप डाउन ओपन कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन ओपन करने पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज। क्योंकि हमको ब्लैंक रोज रिमूव करना है, इसलिए हम रिमूव ब्लैंक रोज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और ये देखिए, सारे ब्लैंक रोज रिमूव हो गए हैं और क्वेरी सेटिंग में एक एक्शन भी ऐड हो गया है। चलिए अब इस एक्शन को अंडू करके दिखाता हूं। इसके लिए आपको सिर्फ क्वेरी सेटिंग में लास्ट एक्शन को क्रॉस करना होगा और आपका लास्ट एक्शन अंडू हो जाएगा और ब्लैंक रोज वापस आ जाएगी। इस तरह से आप इस क्वेरी सेटिंग्स का यूज कर सकते हैं यदि कोई एक्शन आपको पसंद नहीं आ रहा है उसको क्लियर करने के लिए। चलिए अब हम इस एक्शन को वापस से अप्लाई कर देते हैं और ब्लैंक रोज को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें अपने डेटा में ब्लैंक रोज नहीं चाहिए। अब ब्लैंक रोज रिमूव हो गई है। अब इसके बाद यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे इस डेटा में बहुत सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। यदि आप देखना चाहे तो इस डेटा को हम सॉर्ट कर लेते हैं। इसके लिए कॉलम पे क्लिक करें और असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्ट बटन पे क्लिक करके डेटा को सॉर्ट कर लें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफी डुप्लीकेट डेटा है। जिस तरह हमने ब्लैंक रोज रिमूव किया है, उसी तरह डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रिमूव करने के लिए हम रिमूव रोज पे क्लिक करेंगे और रिमूव डुप्लीकेट सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करते ही डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रिमूव हो गए हैं और ये एक्शन भी क्वेरी सेटिंग्स में रिकॉर्ड हो गया है। जैसे जैसे आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्सेल उसको क्वेरी सेटिंग्स में ऐड करता जाता है और यही मेमोरी वो यूज करता है जब आप न्यू डेटा ऐड करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम कुछ कॉलम्स रिमूव करेंगे, क्योंकि ये हमारा रॉ डेटा है और इसमें बहुत सारे कॉलम्स ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं हैं, जैसे डिपार्टमेंट कोड। इस कॉलम को रिमूव करने के लिए इसे सिलेक्ट करेंगे और रिमूव मैनेज कॉलम सेक्शन में रिमूव कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। और अगर हम रिमूव कॉलम्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शंस दिखेंगे। पहला रिमूव कॉलम्स, जिसका मतलब है सिलेक्टेड कॉलम रिमूव होगा, और दूसरा रिमूव अदर कॉलम्स, जिसका मतलब सिलेक्ट कॉलम को छोड़कर बाकी सारे कॉलम रिमूव हो जाएंगे। हम यहां रिमूव कॉलम पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमको सिलेक्टेड कॉलम रिमूव करना है, लेकिन हमारी शीट में बहुत से कॉलम्स हैं जिन्हें हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम कंट्रोल बटन प्रेस करके सारे कॉलम्स को माउस क्लिक से सिलेक्ट करते जाएंगे और उसके बाद हम रिमूव कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, जिससे सारे सिलेक्टेड कॉलम रिमूव हो जाएंगे और ये एक्शन क्वेरी सेटिंग्स में स्टोर हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा या आपका कोई सवाल हो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी बहुत सारे ऑप्शंस पूरे करना बाकी है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम स्प्लिट कॉलम ऑप्शन चेक करेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का पूरा नाम दिया हुआ है, लेकिन हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना है। इसके लिए हम स्प्लिट कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म सेक्शन में स्प्लिट कॉलम ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिखेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, जो ये बताता है कि आपके टेक्स्ट को किस बेसिस पे स्प्लिट करना है। जैसे बाय डेलिमीटर ऑप्शन टेक्स्ट को स्प्लिट करेगा स्पेशल कैरेक्टर के बेस पे, सेकंड ऑप्शन स्प्लिट करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बेस पे। आप इसको एक्सप्लोर करिएगा और कमेंट में बताना अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो। इसी तरह स्प्लिट कॉलम ऑप्शन आपको कॉलम पे भी मिल जाएगा। अगर आप किसी कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे तो उसमें भी आपको स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप ये ऑप्शन कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहां पर स्प्लिट कॉलम में बाय डेलिमीटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिससे ये विंडो ओपन होगा। इसमें सिलेक्ट और एंटर डेलिमीटर ड्रॉप डाउन है, जिस पे क्लिक करने पे ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है कि किस तरह आप अपना टेक्स्ट स्प्लिट करना चाहते हैं। जैसे या तो आप स्पेस के बेस पे स्प्लिट कर सकते हैं, या कॉमा के बेस पे, या इक्वल साइन के बेस पे। हम यहां स्पेस सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे फुल नेम में फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में स्पेस है। उसके बाद नेक्स्ट स्प्लिट एट ऑप्शन है, जिसमें यह सिलेक्ट करना होता है कि इस डेलिमीटर की किस पोजीशन से स्प्लिट करना है। बाय डिफॉल्ट ईच ऑक्यूरेंस सिलेक्टेड है, जिसका मतलब है जितनी बार फुल नेम में स्पेस मिलेगा उतनी बार नेम स्प्लिट होगा। उसी तरह लेफ्ट मोस्ट का मतलब लेफ्ट साइड के स्पेस से स्प्लिट होगा।
राइट मोस्ट मतलब राइट साइड के स्पेस से स्प्लिट होगा। हम अभी डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड रहने देते हैं और ओके क्लिक करते हैं। ये देखिए, फुल नेम अब स्प्लिट हो गया है। यहां पे जिस नेम में 3 वर्ड्स थे वो स्प्लिट होके 3 कॉलम्स में स्प्रेड हो गए हैं क्योंकि हमने स्प्लिट ऑन ईच ऑक्यूरेंस से सिलेक्ट किया था। चलिए क्वेरी सेटिंग्स में से इस एक्शन को रिमूव करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट स्पेस के बेस पे स्प्लिट करना है। अब हम दोबारा स्प्लिट कॉलम सेलेक्ट करेंगे और बाय डिलीमीटर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इस टाइम आखिरी ऑप्शन के बजाय इस बार हम लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर सेलेक्ट करेंगे ताकि सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट स्पेस से नेम स्प्लिट होगा और उसके बाद अगर कोई और स्पेस होगा तो वो यूज में नहीं आएगा। ये देखो, फुल नेम स्प्लिट हो गया है और लास्ट नेम में एक और स्पेस है, लेकिन वो स्प्लिट नहीं हुआ है क्योंकि हमने लेफ्ट मोस्ट ऑप्शन चूज किया था। नेक्स्ट, हम पावर क्वेरी में फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करेंगे। यहां पे सैलरी कॉलम है जिसमें सैलरी दी हुई है, लेकिन अगर इसको देखें तो ये ठीक से फॉर्मेट नहीं है। कहीं पर डेसिमल के बाद 2 शून्य है, तो कहीं पे 1 है और कहीं पर डेसिमल ही नहीं है। तो ये सैलरी डेटा को फॉर्मेट करना जरूरी है। सैलरी का फॉर्मेट करेंसी फॉर्मेट करना बहुत इजी है। इसके लिए सैलरी कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने पे आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे जैसे डेसिमल नंबर, करेंसी, होल नंबर, परसेंटेज वगैरह वगैरह। यहां पे हम करेंसी सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं अब सैलरी कॉलम का पूरा डेटा प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड हो गया है और साथ ही साथ ये फॉर्मेटिंग एक्शन भी क्वेरी सेटिंग्स में रिकॉर्ड हो गया है। नेक्स्ट, अब हम कैलकुलेटेड कॉलम लगाना सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पूरा डेटा एम्प्लॉय से रिलेटेड है और इसमें हमारे पास एम्प्लॉयज की सैलरी भी है। अब अगर हमें सैलरी इंक्रीज करनी हो एम्प्लॉयज की 10% से, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास यहां पे कोई कॉलम तो है नहीं जिसमें हम सैलरी इंक्रीज करके दिखा सके, तो उसके लिए हमें एक नया कॉलम ऐड करना होगा। नया कॉलम ऐड करने के लिए आप ऐड कॉलम टैब पे क्लिक करें और जनरल सेक्शन में आपको कस्टम कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करें। अब कस्टम कॉलम बॉक्स में आपको नए कॉलम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भरनी होगी। सबसे पहले नए कॉलम का नाम दीजिए। हम यहां इंक्रीज सैलरी नाम रख देते हैं। फिर कस्टम कॉलम फॉर्मूला में हमें फॉर्मूला लिखना है जो कि 10% सैलरी इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए इक्वल साइन के बाद हम राइट साइड में अवेलेबल कॉलम्स में से सैलरी सेलेक्ट करके इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई साइन लगाकर 1.1 लिखेंगे, जिससे सैलरी 10% बढ़ जाएगी। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा शीट के लास्ट में, जिसमें हमारी बढ़ी हुई सैलरी होगी जो कि दिए गए फार्मूले के बेस पर कैलकुलेट की गई है। अब हम इस पे राइट क्लिक करके इसका फॉर्मेट चेंज कर लेंगे। क्योंकि सैलरी करेंसी फॉर्मेट में होनी चाहिए, इसलिए हम इसका फॉर्मेट टाइप करेंसी कर लेंगे और इस कॉलम को ड्रैग करके सैलरी कॉलम के पास मूव कर देंगे। ये देखिए, हमारे दोनों कॉलम सैलरी और इंक्रीज्ड सैलरी एक साथ आ गए हैं। हमने अपनी फॉर्मेटिंग लगभग पूरी कर ली है। अब इसको देखने पे ये डेटा ठीक लग रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब हम पावर क्वेरी को बंद कर सकते हैं और अपनी ओरिजिनल एक्सेल फाइल पर वापस आ सकते हैं। जितने भी एक्शन हमने परफॉर्म किए हैं वो सारे एक्शन भी क्वेरी सेटिंग्स में रिकॉर्ड हो गए हैं। वापस जाने के लिए हम होम टैब पर क्लिक करेंगे और हमें ऑप्शन मिलेगा क्लोज एंड लोड। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, पहला क्लोज एंड लोड का और दूसरा क्लोज एंड लोड टू का। पहले ऑप्शन से ये पावर क्वेरी विंडो बंद हो जाएगी और पूरा फॉर्मेट किया गया डेटा आपकी एक्सेल में एक नई शीट में कॉपी हो जाएगा। और दूसरा विकल्प से आपको सिलेक्शन का मौका मिलेगा, जिसमें आपको सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये फॉर्मेटेड डेटा आपको कहां पे लोड करना है। फिलहाल हम इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें अपना डेटा उसी एक्सेल फाइल में लोड करना है। अब हम क्लोज एंड लोड का ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, पावर क्वेरी का पूरा डेटा और सारी सेटिंग्स कॉपी होकर एक न्यू शीट में अवेलेबल हो जाती है। ये देखिए, हमारा फॉर्मेटेड डेटा लोड हो गया है एक न्यू शीट में, और क्योंकि ये एक टेबल है, इस पे ऑटोमेटिकली टेबल फॉर्मेटिंग भी हो गई है, जिसे आप चेंज कर सकते टेबल स्टाइल से। अब हमारे पास पूरा फॉर्मेटेड डेटा अवेलेबल है जो कि इस न्यू शीट में है, और हमारा ओरिजिनल डेटा जो कि एक रॉ डेटा है वो हमारी पहली शीट 1 में अवेलेबल है। ये देखिए, शीट 1 में हमारे पास 57 रोज है, लेकिन डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद फॉर्मेटेड शीट में सिर्फ 46 रोज है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था
कि पावर क्वेरी का यूज करके हम सारे एक्शंस परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हमें सिर्फ रिफ्रेश ही करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। इसके लिए हमें अपनी ओरिजिनल शीट में एक्स्ट्रा डेटा डालना होगा। मेरे पास एक दूसरी एक्सेल फाइल है जिसमें एक्स्ट्रा डेटा है। ये देखिए, इस एक्सेल फाइल में कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब मैं इन्हें कॉपी कर लूंगा। इस पूरे डेटा को हम कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई ब्लैंक रोज नहीं है, कंट्रोल प्रेस करने से पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है और हमें उसमें इस डेटा को ऐड करना है, इसलिए हम इस डेटा में कॉलम हेडर्स के अलावा बाकी डेटा को कॉपी करेंगे और हमारी ओरिजिनल शीट में पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा डेटा एग्जैक्टली सिमिलर रॉ डेटा है जो कि हमारे ओरिजिनल रॉ डेटा से बिल्कुल मैच होता है। तो पहले हमारे पास 57 रोज थी और एडिशनल डेटा के बाद अब हमारे पास 90 रोज हो गई है और हमारी फॉर्मेटेड शीट में अभी हमारे पास 46 रोज है। और अब इस लिस्ट में न्यूली एडेड रॉ डेटा को फॉर्मेटेड स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए डेटा टैब में क्लिक करें और डेटा टैब में आपको रिफ्रेश ऑल का बटन दिखेगा, जिसे क्लिक करते ही पावर क्वेरी में स्टोर की हुई सारी क्वेरी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी और नया रॉ डेटा भी प्रॉपर्ली फॉर्मेट हो जाएगा। ये देखिए, हमारा पूरा डेटा फॉर्मेट हो गया है, जिसने कोई ब्लैंक रोज नहीं है, डुप्लीकेट्स नहीं है, फुल नेम स्प्लिटेड है और वो सारे एक्शंस जो हमने पावर क्वेरी में परफॉर्म किए थे वो सारे यहां अप्लाई हो गए हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे। बाय फॉर नाउ। Are you looking for a way to sort your data based on color like this? I will show you how to get this done, so watch the video till the end and make sure to subscribe the channel. Let's get started. In this video, I am going to show you how to sort the data based on the color. Here in this sheet, I have a data with multiple colors. This data is colored based on the employee's sales performance, where green represents top performer, yellow means average performer and red indicates respective employee's sale performance is low. This data looks good, but what if I want to see the data in such a way that top performers should show up first, then average performers and then lower performers should come at the end? To get this, I would start by clicking on any cell, which has color. In this case, all the columns are colored, so I can click on any cell, and then go to Data tab and from there I will click Sort button, which will bring the Sort dialog box. Here, I have to select a condition, and for that I will select a sort by column, and I will select any column since all the columns are colored. Then, do I need to sort by values or by text? No, usually, we sort the data by number or text, but here I want to sort by color, so I will select the cell color from the sort on list. I will pick the sorting order from order list. Here you will see that Excel has determined all the available colors from text we are using for the sorting and showing only those colors. Since I want to show top performers first, I will select green. If I hit OK, list will put green on top, but I want second color also to be yellow, and for that, I will click on Add Level button to add second condition. Here, it shows then by, that means, after sorting the data based on first row condition, what would be the second sorting condition? I will select employee ID again, then cell color for sort on, then in order list, I will select yellow color, because I want yellow color to be second in my sorted list. Since we have only 3 colors, this should be enough for our sorting, but let me add third condition row as well. For that, I will click on Add Level, and then select Employee ID again, then Cell Color and then for Order List, I will select red color and in the last list, I will select on bottom, to inform Excel, that I want red color to be in the last. Hit OK and now your list is sorted. If you scroll down, you will see the green color at the top for the top sales performing employees, then yellow color for the average performers, and red color at the end representing low performing employees. I want you to know that it's also possible to sort the data based on the font color, and for that if you see the sort dialog box, you will see the font color option in sort on list. That means you can not only sort the data by cell color, but you can also sort them by font color. So this is one of lesser known ways by which users sort their data. I hope you will give it a try. Thank you for watching. Please subscribe to the channel and like and share with your friends. See you in the next video. Struggling with endless lists in Excel? What if your number series built themselves and stayed in sync with your data? In the next few minutes, I'll show you one function that does exactly that. In this video, we'll cover the sequence function,
dynamic numbering that matches your data, filtered lists, custom patterns like dates and IDs, and a few power combos. Grab the practice file from the description. Dragging the fill handle is fine, until it isn't. You overdrag it, or sometime you underdrag it, and as soon as your data grows, it breaks. Let's fix it the right way. Let's go to our next sheet and learn the basics of the sequence function. Sequence returns a series of numbers that spill automatically. The syntax is sequence and inside parenthesis, rows, columns, start and step. Let's check out how to use it. Sequence with one value as 10 would automatically fills the data for 10 rows. Sequence with first value as 5 and second value as 2 would fill 5 rows and 2 columns starting from 1. Sequence with third value as 100 means numbers will start from 100, very useful if you want to fill your data with specific starting number. Sequence with fourth value means Excel will skip by that number, so here at fourth place we have 2, means it will fill the numbers like 20, 22 and so on. Let's move to next sheet to check out the dynamic sequencing. Here, in first case, instead of giving the number for sequencing, we will use rows function like this. Inside the rows function, we will select the range with some extra cells. But with this option, you will notice that even though we don't have any data in few rows at the end, it's still showing the number, which doesn't look good. We have second example where we will use rows function again inside the sequence function for dynamic sequencing. And this time we will use dot operator to get rid of the problem we saw in previous example. Dot operator helps to ignore empty rows. As you can see now, there is no more extra number generated. If you want to learn more about the dot operator, make sure to check out shows at the end of this video or use the link in the description. Now when you add products, you can see sequence number are showing up automatically. Since we have used to range inside rows function, if you keep adding the products in the list, again you will see the sequence has stopped generating because our range goes only till G17. So to solve this problem, we will use whole column instead of using range. Our function now will be like sequence, then rows, and inside rows we will click on column header to select all the rows of column J. And as we used in previous example, we will use to dot operator here to make sure we don't see any sequence numbers for the empty rows. But why there is an extra row? It's because it's counting cell J3 as well. To get rid of that, we will just subtract rows count result with -1. And now your list is dynamic, it will keep showing the number, doesn't matter how far you go for adding products. Let's move on to next sheet to learn how can we use sequence function with filters. Here in this sheet, I have products data with their categories, and I want to add filter on category so that I can see the products for specific category, and when I do that, I want to see the automatic serial number. Let's see how can we do that. First, we will create a drop-down list so that we can use it to select the category for which we want to see the products. To do that, click on Data and go to Data Validation. In this window, select List from Allow drop-down, and then click on Source text box and select all the data in the category column. This will create a list of all the unique categories in a drop-down for user to select. Once range is selected, click OK. Now category selection drop-down is ready as you can see here. Let's add a filter function so that we can see the data whenever category is changed. Type the function like this, =filter, open parenthesis, select the range of the data, then comma, and then select the range of column C where we want to apply the filter, then =2 and select the cell I2, because this is what we want to match to filter the data, close the parenthesis and hit enter. As you can see, our filtered data is coming up, and when you change the category, list changes. Since product list changes whenever category is changing, that means its sequence number would also be changed dynamically. To do that, we will write the function like this. =sequence, open parenthesis, and inside that we will use rows function, and inside that, we will use the filter function the same way we used before. After that, close all the parenthesis and hit enter. Now serial number will generate automatically based on the filtered data using the drop-down list. Now, let's go to next sheet to see how to create custom series using sequence function. Here we will see 4 cases where we can use sequence function to generate a series. First, we will generate the daily dates. For that, we will write =, then today function,
plus sequence and put 10 in parenthesis and hit enter, and series of 10 dates is generated automatically. Change the format of the column. For that, click on the column header and press Ctrl+1 to open Format Cells dialog box and select Date and click OK. Your date series is ready. Next, we will generate the series of month ends. For that, write the formula as equal to EO_month function and pass today function inside that, then comma, and then sequence function and pass 10 to generate the 10 dates, and hit enter. As we did before, similarly, we will format the column. For that, select the column, press Ctrl+1, select date, and hit OK. Your end of month series is ready. Next is generating next 10 business days. For that, we will use workday function and write it like equal to workday, inside that, pass today function, then comma and then sequence function with 10 for next 10 numbers in the series and hit enter. Then format the column by selecting the column, press Ctrl+1, select date and click OK, and next 10 business days series is ready. Last one in this sheet to generate the fiscal label series. Write the formula as equal to, then in quotes FY25P, then and sign, then type function text and inside write function sequence and pass value 10 to generate label for 10 months and close the parenthesis and hit enter, and your fiscal label series is ready. Let's check out the next use case in the next sheet where we will see how to generate the unique IDs. This is useful to generate invoice number, receipt number, tracking number, and many more things. To use this, we will write like equal to, then in quotation INV, dash, and then ampersand, write the function text, and inside that function, write sequence function with value 10, and then comma, and then 4 zeros to format it, after that close the parenthesis and hit enter. Your dynamic IDs are generated. Let's check out the next sheet to learn skip patterns, where we will see how to use sequence function to generate list for odd numbers, even numbers, and even learn how to exclude the multiples of 5 in a series. To get the list of odd numbers, type equal to sequence function, first value as 10 for the 10 rows, second value as 1, to indicate that we need data in one column, third value is 1, which means our series will start from number 1, and last value is 2, which is the key here. It tells Excel to increment each subsequent value in the sequence, close the parenthesis and hit enter. Now odd numbers series is ready. Same way we can generate the list of even numbers. For that, type equal to sequence, inside parenthesis, type 10 for the 10 rows, then type 1, to indicate we need the series in one column, then for third value we need to type 2, which means our series will start from 2, and for the last value, type 2, to increase the sequence number by 2, then close the parenthesis and hit enter. Now list of even numbers are ready. In last example of this sheet, we will see how to use sequence function to generate the list and exclude the numbers which are multiple of 5. For that we will use filter function along with sequence function. Type equal to filter, then as a first value, type sequence with 100 numbers inside it, which means 100 numbers are provided to filter function. Press comma, and then for the second value of the filter function, we will give the filter criteria, which is mod function. Mod will return a remainder, and if it's divisible by 5 means it will return 0, so we have to use non-zero value as a return value, then close the parenthesis and hit enter. Now list is generated. And as you can scan through the list, you will see we don't have 5 or any number which is a multiple of 5, like 10, 15, or 20 and so on. Let's check the last use case we have in our sheet, where we will configure the rows, column, start number and steps to make our list generation configurable. To generate the vertical list, type equal to sequence function, and inside parenthesis, select C2 for first value. For second value, type 1. Because we want series in one column, for third value, select cell C3, and for fourth value, select C4, close the parenthesis and hit enter. And now we have automated list generated using configuration. Let's do the same way and generate the horizontal list. For this we need to column number also as a configurable value. I will type column in B6 and put some value in C6, so that we can use it in the function. Type equal to sequence function, and inside parenthesis, select C2 for first value.
For second value, select cell C6, because now our column will also be coming from configuration. For third value, select cell C3, and for fourth value, select C4. Close the parenthesis and hit enter. And now we have automated list generated using configuration. You can adjust the setting and you will see the list is changing automatically. For instance, if I change the row number from 10 to 15, you will see 15 rows are generated. Similarly, changing other value changes the list dynamically. That brings us to the end of this video. I hope you find this video helpful. Please be sure to like this video and share it with your friends. And if you are new to the channel, please make sure to subscribe down below. See you in the next video. Are you also struggling to find where your pointer is and want to highlight the current row like this when selection change? Let's jump in and set this up. Here's what we'll be working on. A sheet where the active row highlighting isn't set up yet. We're going to change that step by step. The first thing you'll do is select the entire worksheet. Super easy. Just press Ctrl+A on your keyboard. And boom, your whole sheet is selected. Next, head up to the Home tab and find the Styles section. There, you'll see an option called Conditional Formatting. Click on it, then choose New Rule. When the pop-up appears, look for the last option in the list. Use a formula to determine which cells to format. Select that option. Now, this is where the magic happens. You'll need to enter a formula that tells Excel how to highlight the active row. Here's what you'll type. It's also showing in your screen and included in the description as well. Equals row, open bracket, close bracket, equals, cell open bracket, between quotation, row, then close bracket. Let me say that again. Equals row, open bracket, close bracket, equals, cell open bracket, between quotation, row, then close bracket. This formula matches the current row number with the row of the active cell, making it light up beautifully. Once the formula's in, click on Format to choose your highlight color, which you want to see once any row is selected. You can go bold with something like yellow or red, or keep it subtle with a pastel shade, totally up to you. Here, I'm selecting yellow as fill color. Click OK, and just like that, your active row will be highlighted. It's already looking great. But here's the thing. Clicking other places isn't highlighting the row. You don't want just one row to stay highlight. Instead, you want Excel to update the highlighting dynamically as you click through different rows. To set this up, right-click on your Worksheet tab, down at the bottom, and select View Code. When the code editor opens, don't worry if it looks intimidating. It's easier than you think. If the correct worksheet isn't already open in the editor, use the drop-down at the top to select Worksheet. Now, between the lines that say Private Sub and End Sub, add this simple line of code. Target.calculate. Let me repeat that. Target.calculate. That's it. Close the editor and return to your worksheet. Now, as you click on any row, Excel will automatically highlight it for you. Try it out. It's super satisfying to see it work. That's it for today's tutorial. I hope you found this trick as useful as I do. If you did, give this video a thumbs up and let us know in the comments how you're planning to use it. New to the channel? Make sure to hit that subscribe button below so you don't miss out on our other Excel tips and tricks. Thanks for watching, and I'll see you in the next video. Hello friends, welcome to the channel. In this video, we're going to tackle one of the most common and time-consuming tasks in Excel, cleaning messy data. Whether you're working with imported data or user-entered spreadsheets, these tips will save you hours and boost your productivity. Let's get started. Tip 1. Remove extra spaces with trim. Sometimes you'll notice cells that look fine but don't behave correctly. That's usually due to hidden spaces. In order to remove extra space, first insert a new column in column B and name it Trimmed Full Name. Use the trim formula and select cell A2 and hit enter. This will remove the extra space. Now double-click the plus sign to copy the formula in all the cells in column B to clean the data instantly. This is especially useful when sorting or using VLOOKUP, as extra spaces can throw off your results. Now this trimmed full name column has full name, but if you look closely, they are formula result. We need to convert this formula to value. This is really useful.
To avoid change of the data if formula is recalculated and produces the different data. To do that, select column B, copy the data, and then select Paste Special, which will open the Paste Special dialog box. Here you need to select Value and click OK. This will convert formula to value. Tip 2. Split data with text to columns. Ever received a column with full names or addresses in one cell? Use the Text to Columns feature under the Data tab. In order to split full name into first name and last name, we need to first insert two columns which can hold the data for first name and last name. Select column C and D and then insert the column. Now select column B, go to Data and select Text to Column. In the Open dialog box, select Delimited and click Next, select Space. This tells Excel how to split the data of full name column. Click Next and select C2 cell as destination where split data would be copied, then click Finish. Now first name and last name will be split and show in column C and column D respectively. Tip 3. Use Find and Replace match case. Find and Replace is your secret weapon. Let's say you want to replace Manager with Lead, but only if it's in proper case, Manager. Hit Ctrl+H, type Manager, type Lead, and check Match Case, and hit Replace All. Now it only replaces exact matches. Great for case-sensitive cleanup. Tip 4. Highlight duplicates with conditional formatting. Want to find repeated names, emails, or IDs? Select your column, Home tab, Conditional Formatting, highlight Cell Rules, Duplicate Values. Choose your color and instantly visualize repeated entries. No formulas needed. Data cleaning is the foundation of good analysis. By mastering these simple but powerful techniques, you'll turn messy spreadsheets into clean, professional datasets. If you found this video helpful, give it a thumbs up, subscribe to the channel, and let me know in the comments which tip was your favorite. Thanks for watching, and see you in the next video. Have you ever needed Excel to display numbers in words, like converting 1250 into 1250? Or 365 to 365? In today's video, I'll show you a quick VBA trick to make that happen in just a few minutes. Hello friends. In this video we will see, if we need to convert numbers to words, then how can we do this? To do this, first of all, I will type equal to number, and as you can see I don't get any suggestion to convert number to words. Similarly, you would also be not getting this option, because Excel doesn't give you any ability to convert number into words. Now, I will tell you how to enable this functionality. First of all, you need to open a file. The link of this file is in description. Just copy that file path and open it in any browser. As soon as file opens, you will see the code like this. Select the whole code by pressing Ctrl+A and copy it. After copying, go back to Excel, and then right-click in Sheet tab and select View Code. You can do this with keyboard short Alt+F11 as well. This will open a code window. Now you need to click on Insert menu and click on Module option. Paste the copied code here and close this window and go back to your Excel. Now, let's try by pressing equal to and type number, and you can see number towards function is available in the suggestion. Just select it, and select the cell and close the parenthesis and hit enter. Boom, your number is converted into the words. You can copy the formula in all the cells and you can see that all numbers are converted into words. That's all in this video. Make sure to download the full VBA code from the link in the description. Try it in your own sheet, and let me know in the comments if it worked for you. If you find this video helpful, please give me thumbs up and subscribe to my channel. And if you have any question, please let me know in the comment sections. Thank you for watching. See you in the next video. Many times we drag a formula beyond that what we need, just to consider in case if any new data comes that formula would cover. But that leaves us with some extra rows with zero. That's not only ugly but confusing as well.